Okay. So we are learning now that two charges will, what will happen, like charges will repel, right? With what force it is repelling? That force we want to find. दोनों like unlike charges attract each other. With what force is getting attracted? That one we are learning. Okay. So उसके लिए we have to know one law which is Coulomb's law. ये न्यूमेरिकल से आएगा पूरा, अच्छे से कॉन्सेप्ट करो, ईयर से थोड़ा डेप्थ में जाने वाला है. Coulomb's law. So first we'll see the definition of Coulomb's law, what he told, and उसका formula क्या है, we will learn. Okay, it states that force between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. First write down, I'll explain. Okay, suppose मान लो there are two charges plus q1 plus q2. Two charges are there. Center to center separated by distance is r. R is the distance between them. A first charge मान लो, a second charge मान लो. Okay. Now tell me this charge इसको क्या करेगा? Repel करेगा, attract करेगा? This charge. Repel. With some force से repel करेगा ना? That force is, I call it as force on 1 due to 2. Repel होगा ना? And that force will be along the line joining the charges only. उसी direction में होगा. It not be like this or like this. It will be along the line joining the charges only. The force will be. Okay. Now this charge इसको repel करेगा with some force. I call it as force on 2 due to 1. Right? So Coulomb's law ने क्या बोला? That force on 1 due to 2 magnitude is equal to force on 2 due to 1 magnitude is equal to F. Both magnitude is same. Both force is same. Okay. And this force is proportional to what? Directly proportional to the product of charges. Q1, Q2. Right? More the charges, more the force. Right? And this force is also inversely proportional to the square of the distance between them. As the distance increases, the force goes on reducing. Right? When I combine and remove proportionality, we'll get constant, right? So I call that as, I'll combine F is equal to K Q1 Q2 by R square. Very important. Force का formula आ गया. Force between any 2 point charges is K Q1 Q2 by R square, where K is called as electrostatic force constant. Electrostatic force constant. Electrostatic force constant. K Q1 Q2 by R square is the formula, and K is nothing but, देखो, K is equal to actually 1 by 4 pi epsilon m. Okay, epsilon is nothing but permittivity of medium. इसको क्या बोलते हैं? Permittivity of medium. मतलब एक एक मीडियम का एक एक परमिटिविटी वैल्यू विल बी देयर एंड K वैल्यू विल बी डिफरेंट. But in air, K will be what, 1 by 4 pi epsilon naught.
this naught is nothing but, मतलब epsilon naught is nothing but permittivity of free space or air, and its value is fixed. 1 by 4 by epsilon का value is 9 into 10 to power of 9. And by seeing the formula, can you tell me the units of the k value? Newton कितना होगा? Newton meter square by Square per Coulomb Coulomb square. square. Yes. Newton meter square per Coulomb square. This value is only in air में. And whenever question may not mention, you have to take air only. Okay. So 9 into 10 power of 9. So formula क्या है? F equal to K Q1 Q2 by R square. This force से repel होगा and this force से attract होगा, and definitely K depends on medium. That means force depends on medium, right? मतलब same charges, same distance I put in water, same charges, same distance I put in air, the force is different because K depends on medium. Understanding? So this is a Coulomb's law, he told. So formula क्या है? F equal to, tell me. K Q1 Q2 by R square. R square. Understood? Sriram, understanding? Sir, one Yeah. doubt. Sir, What in else? which direction is the force acting? That only. For this charge, the force will be like this, and for this charge, force will be like this. Okay, but magnitude wise same hai. Magnitude wise same. They Okay. have to be of same charge. Can one be negative and one be positive? It based on that. If it both are see, one positive one negative है तो क्या होगा? Correct, correct. अट्रैक्ट करेगा. ये चार्ज देखो, ये चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, राइट? सो फोर्स विल बी लाइक दिस. फोर्स ऑन, इसको 2 मान लो, फोर्स ऑन 2 due to 1, एंड ये चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. फोर्स ऑन 2 due to 1 is 1 to 2 ऐसा. So they can based get on the each other, negative or positive. it can be anything. Force will be same. Okay, both equal and opposite. Direction wise में different, मतलब opposite direction, but force is same. Magnitude wise same. Okay. They won't cancel off each No, other. they'll cancel when it. Force we are calculating. कितना force है? Like magnet लगाऊंगा नजदीक में, और pin लगाऊंगा, pin and magnet लगा रहा हूँ ना, वो pin attract हो रहा है ना, कितना force से attract हो रहा है? That force we are calculating. Okay. मतलब एवरीवेयर, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर विल बी देयर, राइट? कैंसिल हो जाए तो जीरो हो जाएगा, पर फिजिक्स ही नहीं रहेगा. सो वेक्टर ऐसा नहीं है. सो इसका मैग्नीट्यूड इज देयर, k q1 q2 by r square. ओके, नाउ इसका लिमिटेशंस आर देयर. ऐसा नहीं कि समवेयर अप्लाई करना, नहीं करने का. लिमिटेशन क्या है इसका? दैट इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्जेस एंड नॉट एन एक्सटेंडेड चार्जेस. एक्सटेंडेड चार्जेस मीन्स एक रॉड है सपोज, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका चार्ज है q मान लो, a डिस्टेंस दूर में, आई वांट टू वन मोर चार्ज इज देयर प्लस q2. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीस टू चार्जेस मींस वी कैनॉट अप्लाई because these are extended charges. Only for point charges only we can apply Coulomb's law. Okay, and what is meaning of point charge means? Definition क्या होगा? Point charge means, according to you, what is meaning? Like no volume. No volume. Okay, and the distance, in terms of distance also we can tell, right? q1 q2. Like if you see the size of this charges, uska radius वगैरह देख लिया तो that should be very very much less than the distance between them. Then also we can say point charge. Okay, एक sphere मान लो, इसका radius, some radius is there, उसका distance is so far than the radius size of the sphere, that then also we can treat that as a point charge. Like आपको which formula जैसे लग रहा है? If you see the formula, which formula जैसे लग रहा है? F equal to k q1 q2 by r square बोल के, which formula जैसे लग रहा है? Gravitation. ग्रेविटेशन. तो हम लोग ग्रेविटेशन टाइम में टोल यू, ग्रेविटेशन आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा बोल के. ओके, so there capital G m1 m2 by r square, there also one that should be applied for only for point charges only. I told you capital G m1 m2 by r square, but we are applying between the sun and the moon, sun and the earth. Why? Because iska size and distance is very very comparable है, both. That's why we can treat it as point charge only. Okay, chalo. Next also is there one. It is applicable only for stationary charges. Suppose plus q1
plus q2. q1 is moving with some velocity v. Can we apply Coulomb's law? K q1 q2 by r square. No, right? We can't apply the Coulomb's law. It is applicable only for stationary charges only. Electrostatics में stationary charges only, right? उसकी में we are applying this one. चलो. And one thing you have to understand that. Sir, what if they're both moving with three in the same direction? तो क्या होगा? Then they're Same direction में मतलब R change नहीं होने का. Major intention क्या है? R should not change. So that is the thing. Stationary charges को. Okay. Now electrostatic force is also what? Electrostatic force is, like I told examples, I'll tell you, you should say which type of force it is. Gravitational force, spring force, electrostatic force is a dash force. Conservative force. Okay. Conservative force याद है? Conservative force का work done in a closed path is 0 and they are path independent. We proved also last year में we proved that gravitational force is a conservative force बोल के, right? चलो लिखो electrostatic force is a conservative force. लिखो. Okay. Electrostatic force is a conservative force. Okay. Chalo. Next. Since it is looking, the formula is looking like law of gravitation जैसा, that's why we will have a comparison with law of gravitation. Comparison करने वाला है. Okay. So we know this one, right? Q1, Q2, separate distance R, and I call this as F12, and I call this as F21. And we know the formula: force is equal to K Q1 Q2 by R square. Okay. Here M1, M2 separated by distance R. So what is the formula? Force. A pura attractive force, right? They are attracted, right? Masses will be attracting, right? So F equal to capital G M1 M2 by R square. Okay. Capital G का value कितना है? Capital G का value is 6.67 into 10 power minus. 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. Okay. And here K value कितना है? 9 into 10 to the power of 9 Newton meter square per Coulomb square. Okay. Now tell me the similarities पहले बोलो, बाद में differences बोलो, दोनों में. What is the similarities between these two? It's inversely proportional to R square. लिखो, first point लिखो. I call this as FE and this is I call as FG. Okay, लिखो FE and FG follow inverse square law. Follow inverse square law. Next similarity. और एक similarity बोलो. Both follow inverse square law. Okay, next. दोनों में similarity क्या है? They're both conservative. Both are लिखो. Both are conservative forces. All have unmute button is there. Holy she is answering. क्यों खराब हो गया buttons पूरा? ऑन करके बोलो. Okay, next Sadik will tell. One more similarities, Sadik. Similarity means common क्या है? लिखो. Both are central force. Center to center only it will act. देखो central to center only it will act. Okay, लिखो. Both are central forces. Okay, now differences लिखो. बोलो.
डिफरेंसेस। शिवंगी बोलो, डिफरेंस क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इसका? दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, but a force can always attractive. लिखो, Fe can be attractive as well as repulsive, but Fg is always attractive. Okay. Next, which force is depending on medium? Which force is depending on medium? Fe. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडिंग ऑन मीडियम, राइट? ये वाला आप पानी में रखो, एयर में रखो, किधर भी रखो, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं उसको, दैट्स व्हाई एवरीवेयर कांस्टेंट है. सो लिखो, Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम while Fg does not. And which force is greater force? Gravitational force or electrostatic force? Which force is greater force? Electrostatic force. Okay, you tell me. Everybody. Which force is greater force? Electrostatic force or gravitational force? Satvik. Electrostatic force between two charges. Gravitational force, gravitation, earth है ना? हाँ. electrostatic. Okay, भाई लग रहा है electrostatic बोल के? नहीं, शिवांगी बोला. नो प्रॉब्लम, रॉन्ग है राइट? कौन कोई डांटेगा क्या? चलो बोलो. Sir, electrostatic because the constant is much greater. K वैल्यू इज 9 इन 10 पावर ऑफ 9. ये तो देखो 10 पावर ऑफ -11. ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा है. ओके, हम लोग जनरली अरे मदर अर्थ है ना, ठीक है, हम लोग उसको देंगे बोल के उसको प्रेफरेंस देंगे, ऐसा नहीं है. सो लिखो, Fe इज मच मच ग्रेटर देन Fg. ओके, सो ये चेक करने के लिए वी विल सी कितना टाइम्स ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना टाइम्स ज्यादा है बोल के एक छोटा सा न्यूमेरिकल थ्रू वी विल लर्न. एंड इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह मालूम है ना? इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन समथिंग 10 पावर ऑफ लास्ट 6. 10 power of 6. 10 पावर 6 इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन. हाँ, 10 पावर 6 है तो 10 power minus 31 kg. -31 ए बाजू में वैल्यू भी रहेगा. सब लोग 1.8 नो, proton. 9.1 9.1 into 10 power of -31 kg. Electron -31 is very small. Electron का mass, that's why in atom में whenever we are treating mass का, electron का mass we are neglecting. Proton and neutron का mass रहेगा. Do you tell me proton and neutron का mass कौन सा ज्यादा रहेगा और सेम? Neutron has Neutron mass is slightly more. That's why, but in our subject we are treating both are same only. Okay, neutron proton ka. Okay. Now we will see the numerical. Chalo. Find the, you can use calculator also, no problem. Find the ratio of electrostatic force to the gravitational force between two electrons kept in free space. मतलब दो electrons are there. Electrons are there. Free space means air में रखा, separated by distance r. I want to find electrostatic force and I want to find the gravitational force. So you can use the formula and solve. Approximately कितना terms आ रहा है बोल के check करेंगे. So here electrostatic force K Q1 Q2 by R square. इधर क्या होगा? Capital G M1 M2 by R square. Distance is same, cancel. और substitute K की जगह में. And charge of electron so you know, right? याद है? वो तो बैठ कर देने का. Charge of electron, mass of electron 1.6 into 10 power of minus बोलो
-19. -19 लिखो. Substitute until approximately 10 power of कितना times आ रहा है? Can you use calculator शायद दोनों पर. Ten power 44. Okay, approximately लिखो. Electrostatic force is approximately 10 power of 42 times that of gravitational force. उतना ज्यादा है, उतना हाई है electrostatic force. चलो डेप्थ में जाएंगे, क्वेश्चंस पूरा करेंगे, आराम से समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करो. A charge Q is divided into two parts such that electrostatic force between two parts is maximum. Then find the charge on each part. Charge को we have to split into two parts. Equal parts नहीं है. Any two parts split करो such a way that the force between them is maximum. So Q by 2. देखेंगे y Q by 2. Because the value is maximum when they are equal. It will be square of it. ऐसा थोड़ी ना है. Who told maximal के? हाँ tell me. मेथड करो, मेथड करके प्रूव. So Q by 2. Why? I did maximum minimum. Okay. But it worked, it worked. Okay. You tell me शिवांगी कुछ आया? I got Q by 2 as well. Okay. मेथड. I made it a function and then differentiated to get the maximum value. That's not Yes. Method is correct only. देखो. Charge Q को we have to split into two parts. Okay. एक part को x बोलो. Remaining part कितना होगा? Q minus X. Q minus x. Right? Okay. Now force between these two charges find करो. We know the formula, right? K Q1 is x. Q2 is Q minus x by R square. Right?
now multiply करो, F is equal to K Q X minus K X square by R square. This is a force between the two charges. Okay. He told the force between the two parts is maximum. We studied first year mein maximum, you know, right? When will be the, and which is a variable one? Q or X, which is variable? Q, X, right? X is the one, right? Okay. Now force is maximum, minimum. We know that df by that variable wala dx is equal to 0. Maximum is the minimum is the, since it told maximum, we are equating with 0. Okay. 1 by r square is constant. 1 by r square. Okay. Kq, differentiation of x is 1. Minus k is bahar aa jayega. Differentiation of x square is 2x is equal to 0. So k cancel and r square gaya. So x is equal to q by 2. If x equal to q by 2, q minus x is also q by 2. That means when you split exactly into two equal parts, and if you calculate the force, that force will be always maximum. Okay? Understood? Okay. Chalo. Now karo dekhte hain. क्या बेटा? डिफरेंशिएशन हम लोग सोचेगा किधर यूज होगा लाइफ में, बहुत 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 जगह में यूज होगा. मेडिकल पर्पस में यूज होगा, सेटेलाइट्स में यूज होगा, मोशन ऑफ द पाथ, एवरी पाथ में हाउ दे आर गोइंग, एवरीथिंग डिफरेंशिएशन डिविजन ओनली. जनरल लाइफ में सॉफ्टवेयर कंपनीज में अरे किधर है ऐसा नहीं है. जनरली इन सर्टेन एप्लीकेशंस में सो मच यूजफुल है. दैट टाइम अरे यूजफुल है हम लोग किया है बोल के लगेगा आपको. ओके चलो नेक्स्ट करो. Find the electrostatic force between them. Center to center distance is 2 meters they given, and charges are given. First charge is 5 coulomb and second charge is 4 coulomb. Find the force between these two charges and tell me whether repulsive or attractive also. This is 5 coulomb and this is 4 coulomb. So what is that R is equal to? Radius is 1 meter So and both. distance, center to center distance all given. If you want, you can use something. कितना चाहिए? 11.25 into 10 power 9. 11.25. Okay. Okay. Yeah. 11 point क्यों आया? ये center to center distance only given, right? Center to center distance only R is center to center distance only. 4.5 into 10 power 10. देखो Yeah. क्या Same. Yeah. 11 में कंबाइन कर दिया 4 4.5 बोल के. into क्या मिस्टेक 4.5 into 10 power 10. ओके देखेंगे. उनको बोलो, शिवंगी को बोलो क्या मिस्टेक किया सानवी. Sir, I Then- thought R was including the radius, so I added both. Okay. So R is always center to center only. You should take always. They given center to center 2, right? So कितना आया सात्विक? 45 and 10 power 9. चलो 4.5 into डेसिमल में लिखने का, राइट? सो 4.5 into 10 to the power of 10. रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों लाइक चार्जेस है ना? Repulsive. रिपल्सिव. सो आंसर इज बिग रॉन्ग. ओके लिमिटेशन पढ़ो. कूलम्ब्स लॉ में फर्स्ट लिमिटेशन क्या है बोलो. व्हाट इज इट? Point इट one. इज नॉट अप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास. ये पॉइंट मास नहीं है. देखो साइज 1 मीटर 2 मीटर ये कंपेरेबल है. दिस इज नॉट ए पॉइंट मास. सो हियर Coulomb's law is not applicable. We cannot. अभी याद रहेगा लिमिटेशन, कभी भी भूलेगा नहीं.
So Coulomb's law is valid only for point charges. देखो 1 meter and 2 meter बहुत मतलब comparable है. This is not a point charge. अगर size is so small, ये बहुत बड़ा है, then we can treat this as point charge. So here Coulomb's law we cannot put. If we put also wrong answer आएगा. Force उतना नहीं रहेगा. Okay? समझ में आ रहा है? चलो. And one more important thing you have to note बोल के लिखो. F equal to K Q1 Q2 by R square में we should put without sign. Without sign we have to put. Very important. Without sign बोलते हो. Suppose 2 coulomb is there, minus 3 coulomb is there. What is the force between two charges means K 2 into 3 we should put. We should not put 2 into minus 3. Because already we are taking the direction. इस तरफ है, left side, right side बोल के हम लोग लगा रहे हैं directly. So no need of putting any sign. Without sign, very important. Without sign आपको calculate करना पड़ेगा कभी भी. We are finding magnitude. We are trying to find always. Direction से नहीं लगने का. We should tell arrow से we can tell that left side or right side, but we should not put without sign के बोलने का, right? चलो. नाइस क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करो. डेप्थ में जाने वाले बहुत डेप्थ में जाएंगे. ऑल क्वेश्चंस विल बी कवर्ड. ओके, डरने का नहीं क्वेश्चन का. एंड यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज सच ए सब्जेक्ट लाइक 7 chapters, right? 7-8 chapters are there, right? इंटरकनेक्शन विल बी देयर. फर्स्ट चैप्टर समझ में, सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, सेकंड चैप्टर तो थर्ड चैप्टर नहीं आएगा, थोड़ा इंटरलिंक होगा. सो कनेक्टिविटी डोंट बी एब्सेंट्स. ओके, अगर मिस हुआ तो भी उसमें वीडियोस आर देयर, वो वीडियो में आप देखो कभी भी. ओके, चलो. सी उसमें बैच में आई पुट ऑलरेडी, यू सॉ, आई थिंक सो, विजन 12 बोल के ब्रैकेट में आईआईटी बोल के रहेगा, आईआईटी नीट बोल के रहेगा. वो वाला आप परचेस कर लो, विजन 12 बोल के. उसमें वेबसाइट में डिजायर. दिस ओनली फॉर आवर स्टूडेंट्स ओनली. ओके, चलो. हाँ करो, देखते हैं कितना अच्छा आएगा सब लोग को. Two identical small charges each having a mass m. Okay, दोनों चार्ज है, मास m है. hang in equilibrium as shown. The angle, see initially ऐसा था, दोनों नजदीक में. ऐसे लीव करने से क्या होगा, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? ये रिपल होगा, इधर इधर आके रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया. Certain angle theta is given and length is L is the length of the wire. Okay, the angle made by the string with the vertical is theta. Find the magnitude of charge on the sphere. I want to find charge on the sphere. Okay, like variables में आएगा, you try to find in terms of given content only, which I want in terms of that one. Okay, मतलब L M ऐसा terms theta वो terms में ही चाहिए मुझे. Find the charge on the sphere. Sir, K Q square by 4L square sine square theta. K Q square by 4L square sine square theta. okay, देखेंगे. क्यों स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या कुछ कैसा है? ओके, करो उसका. ओके, ट्राई करेंगे. आयशा आंसर करो. So they're asking charge now. Meaning हाँ, Q is- चार्ज क्यों चाहिए? ऑन के क्यू स्क्वायर क्यों बोल रहा है असल? ओके, चार्ज चाहिए, क्यू इक्वल टू आई.
Sir, 12 sin theta root mg tan theta by k. 12 sin theta mg tan theta by 2. 12 sin theta outside. After that, whole root mg tan theta by k. ओके देखेंगे. चलो देखेंगे. साथ का है कुछ. 12 sin theta under root mg cos theta by k. ओके देखेंगे. cos थीटा tan थीटा छुएंगे. कुछ थीटा आया, कुछ थीटा वगैरह. ओके देखेंगे. देखो दिस इज इन इक्विलिब्रियम इट ऑल राइट. हैंग करके इक्विलिब्रियम रुक गया. ऐसा जुम 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 रुक गया. Okay, since we talked about equilibrium, we know our Newton's laws of motion में equilibrium is net force is zero, upward force, downward force, side force equal to this one. Okay, इसमें what are the forces acting on it? इसके ऊपर, इस मास के ऊपर. One is mg, right? एक स्ट्रिंग है. कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? स्ट्रिंग है ना. कौन सा फोर्स? Tension. टेंशन फोर्स. Okay, this is angle theta, this also angle theta. Okay, one more force acting on charge. कौन सा फोर्स है? Electrostatic force. Because ये रिपल हो रहा है ना. So electrostatic force is acting like this. Okay, and we'll take the components now. T का इस तरफ component is wherever theta is there, that cos आएगा ना. T cos theta, and ये component will be T sin theta. And distance between them मान लो r है. R can you tell me in terms of L में? ये distance कितना होगा? 2L sin theta. Because L cos theta, L sin theta, right? L sin theta plus L sin theta will be 2L sin theta. Okay, R भी आ गया. Okay. Now since they are equilibrium, we can equate, right? This side force equal to this side force. So T sin theta is equal to electrostatic force. And दूसरा upward force, downward force, T cos theta is equal to mg. Okay, divide करो 1 by 2. If you divide, TD cancel. 1 divided by 2. So क्या होगा? So tan theta is equal to electrostatic force between these two charges. क्या होगा? K q square by r square means 4L square sin square theta. तो मैं r square means इसका square कर रहा हूँ. Okay, by mg. We are dividing fe by mg. Fe की जगह में I am substituting k q square by r square by mg. Okay, from this आ जाएगा. कहता हूँ q की जगह में क्या है? q equal to ये by 1 right? by 1 right? So नीचे mg हो जाएगा. So क्या होगा टेल में? ठीक है. tan theta is equal to k q square by 4L square sin square theta mg. Right? Now cross multiply करो. खत्म. So q square is equal to q is equal to under root 4L square sin square theta mg tan theta by k ना. By k. K is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught. So ऊपर लेके आए तो 4 pi epsilon naught. खत्म. This is answer. In terms of things. Okay. So ऐसा क्वेश्चंस दिया भी डरने का नहीं है. चलो. Now force between two charges में we are not putting any sign. Always k q square by r square वाला यूज कर रहे हैं. Okay. चलो. फिर हम कब बेटा अंडरस्टैंडिंग है? Okay. Now we'll go for the Coulomb's law in vector form. Vector form.
वेक्टर फॉर्म में थोड़ा डायरेक्ट फॉर्मूला से अच्छा आपको थोड़ा डिराइव करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करो. सो प्लस Q1 प्लस Q2, center to center distance is R, and we know this is first charge, second charge, and force इसको क्या बोलते हैं, force on 1 due to 2, and ये force कितना होगा, force on 2 due to 1, right? I want force on 2 due to 1, एक force find करेंगे, उसका सिंबल चेंज करने से F12 भी आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में चाहिए. ओके, वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? ओके, मैं क्या करूंगा, एक दिस इज इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1, इसका पोजीशन वेक्टर इज R2. यू नो पोजीशन वेक्टर, राइट? पोजीशन वेक्टर मींस ऑरिजिन से कनेक्टिविटी एड्रेस का. ओके, दिस इज पोजीशन वेक्टर. I will introduce one position vector which is along the direction of force. I call it as R1 final minus initial. R1 minus I2, R2 is a position vector. Okay. Same in this direction of force, I am introducing one position vector. I call that as final minus initial, right? R2 minus R1. Position vector introduce किया because vector form में useful होगा भी. Okay. So now I want to find F21 vector. I want to find. Okay. Vector has both magnitude and direction. Okay. Magnitude तो मालूम है क्या है, K Q1 Q2 by R square, right? R square I can write as mod R square only. Magnitude square. Okay. Now direction. Direction is given by, vector has both magnitude direction. Direction is given by, we called, I told you when I'm talking about vectors में, एक पार्टी में जाने के लिए, एड्रेस पता चलने के लिए, लाइक बाहर में बोर्ड्स होते हैं ना, सिमिलरली वेक्टर्स में क्या होगा, which will tell that it is going, the vehicle is going in x axis, y axis, z axis. Unit vectors. Unit vector. Unit vector will tell the direction, right? So always vector has both magnitude direction. Okay. Now tell me, इस direction में कौन सा position vector we should take, R1 minus R2 or R2 minus R1? In the direction of F21 में. R2 minus R1. So R2 minus R1 का unit vector I am taking. Unit vector का काम वो simple direction दिखाने के लिए. Okay. Now देखो, F21 is equal to K Q1 Q2 by, I can write mod R को, I can write same thing like R2 minus R1 whole square only, because ये displacement का square and इसका square is same. Okay. And what is A cap का formula? याद है? Vector A by mod A. Vector A by mod A. Okay. Now इसका vector A by vector A by mod A, mod R2 minus R1 mod. Okay. Now square into this one power 1 is cube हो जाएगा. Therefore F21 formula आ गया is K Q1 Q2 by mod R2 minus R1 whole cube into R2 vector minus R1 vector. This is a formula for F21. F21. Okay. Now F12 चाहिए बोले तो F12 means simply change 1 and 2. That's it. K is the same Q1 Q2 by instead of R2 minus R1 क्या आएगा, R1 minus R2 whole cube into R1 vector minus R2 vector. खत्म. So this is the formula we have to learn in this manner. See, when we have to use this formula, when the charges they'll give in terms of I cap, J cap, K cap. That time vector form may only, there is no other way. We cannot use K, Q1, Q2 by ask. If they're given 2 coulomb, 3 coulomb, directly we can use. But when they're given position vectors I cap, J cap, we have to use this formula. And in this way, in vector form, we have to put Q1, Q2 with sign रखना पड़ेगा. With sign. Q1, Q2 with sign रखना पड़ेगा. Okay, vector form में writing, right? Scalar form में no need, but vector form में
we have to write with, we have to put with sign. So by head karo formula. And you know mod find करना आता है ना, mod find करना अंडर रूट ax square plus ay square plus az square वो करने का, right? हो गया, फॉर्मूला बैठ कर लिया, इज ऑल फॉर्मूला शीट में है, आई विल गिव, ओके, थोड़े थोड़े दिन होने के बाद आई विल गिव सो दैट इजी फॉर यू, देन ओनली कैन अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन, कैसे समझ में आएगा, ओके। टेल मी शिवंगी, फॉर्मूला F12 का फॉर्मूला बोलो, F12 K Q1 Q2 divided by mod R1 mod of R1 minus R2 whole whole cube cube into R1 minus R2 into R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ओके। हाँ, इधर तो आई कैप जे कैप में आएगा, इधर तो आई कैप जे कैप में आएगा, इधर तो मॉड मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, ओके। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू ए चार्ज, मतलब ही इज टेलिंग टू फाइंड force on, मतलब F12 is telling to find. So two charges are there, Q1, Q2. Okay, इसका position vector is given as 1, minus 1, 2, and इसका position vector is minus 1, 1, 1. He is telling to find force on 1 due to 2. इसको in terms of I cap, J cap में लिख सकते हैं position vector को। R1 vector क्या होगा? I cap minus J cap plus 2K cap. हाँ, सॉल्व। F12 का फॉर्मूला K Q1 Q2 by mod R1 vector minus R2 vector whole cube into R1 vector minus R2 vector. Micro is 10 power minus 6. So R1 vector क्या है? I cap minus J cap plus 2K cap, and R2 vector is minus I cap plus J cap plus K cap. Now solve. four by three I cap minus 4 by 3 J cap plus 2 by 3 K cap into 10 power 11. Into 10 power 11. no. इसका R2 minus R1 कितना है? 2 I cap minus 2 J cap plus K cap. हाँ, K cap, that is on बाजू में रखो। इसका मॉड कितना है R1 minus R2 का? 3 cube. ओके, करो। K is 9 to 10 power of 9. Keep the हाँ, fraction outside. 2 by 3 into 10 power 11 into the vector. 2 by 3 into 10 power of minus 1 आएगा, Minus. because Charges are new C. Yeah. Q1 is 20 into 10 power of minus 6 into 10 into 10 power of minus 6 by 27 into that one, 2I cap minus 2J cap plus K cap. Yes. समझ में आया how you got बोल के? So
if you solve you'll get the answer. So there is no other option here. आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, एंड हियर दोनों सेम साइन है तो ओके ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू पुट विद साइन वेक्टर फॉर्म में. इसमें चलो, now till now we learned about the two charges का forces. If there are 3 or 4 charges, then क्या होगा? What will you do? एक चार्ज इधर है, इधर 1 2 3 4 charges are there. Who will apply a force? This also will apply, this also will apply, this also force. Vectorially add करना पड़ेगा. That principle is called as principle of superposition of charges. लिखो, principle of superposition of charges. इसका स्टेटमेंट वगैरह लिख के tomorrow we'll do numericals completely. इसका so what is principle of superposition of charges says, if there are n charges, then the net force on any one charge is a vector sum of the forces due to all remaining charges. Okay, suppose मान लो you have q1 q2 q3 so on to qn. I want to find net force on qn. कौन कौन अप्लाई करेगा? ए भी अप्लाई करेगा, ए भी अप्लाई करेगा, ए भी अप्लाई करेगा. सो वी हैव टू ऐड, वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा. फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन n ड्यू टू 3 सो ऑन फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1 चार्ज. उसको छोड़ के रिमेनिंग पूरे चार्जेस का. सो ऑल वेक्टोरियल ऐड करना पड़ेगा. वेक्टोरियल मींस आपको वेक्टर्स पूरा आपको आना पड़ेगा. ओके, लाइक पैलोग्राम लॉ वगैरह लर्न करने वाला है. याद है वेक्टर्स? बिकॉज दैट्स व्हाई अभी सेकेंड ईयर पूरा वेक्टर्स पूरा आएगा, वेक्टर्स चैप्टर्स का. दैट्स व्हाई नो वन विल टच वेक्टर्स इन द फर्स्ट ईयर में अगेन, बिकॉज इतना परफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एवरी टॉपिक में वेक्टर्स हो जाएगा. ओके, तो देखो याद है फॉर्मूला, ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा है. So what is the resultant vector? इससे पहले you draw one line, इससे पहले you draw one line, the resultant is 1. So tell me what is the formula? R is equal to under root a square plus b square plus कितना? 2ab cos theta. 2ab cos theta. Resultant. Okay, now करो, देखते हैं. F vector, F vector. दोनों f and f दिया है. एंगल इज 90. फाइंड रिजल्टेंट. F root 2. यस, रिजल्टेंट इज f root 2, राइट? बिकॉज 4 टर्म्स में आएगा जनरल अभी क्वेश्चन. ओके, f एंड f, एंगल इज 60. रिजल्टेंट फाइंड करो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो. F root 3. यस, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको इजी हो जाएगा. ओके, f एंड f, एंगल इज 120 डिग्रीज. फाइंड रिजल्टेंट. F. अरे बाहर कर दिया और कर रहा है. ओके ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन, एंगल इज 0 डिग्रीज, राइट? सो क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2f. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन मींस सपोज 2f एंड f, F. एंगल इज 180 डिग्रीज. F. सो नेट रिजल्टेंट इज f, राइट? इन दिस डायरेक्शन में आएगा. ये तो इजी, राइट? हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स यूज करके वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स. इसमें आपको मजा आएगा पूरा. ओके